हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप सिंह खरा और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मर्चेंट नेवी इंडिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस सेशन के लिए, बिकॉज अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो मेरा ये आइडिया है कि आपको ऑफिसर साइड में ज्वाइन करना चाहिए सबसे पहले। और अगर आपको ऑफिसर साइड में ज्वाइन करना है तो दो ही ऑप्शन, एक है डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और दूसरा ऑप्शन है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। दोनों केसेस के लिए आपको IMU CET जरूरी है। ये मेरे पीछे जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ये एक वो यूनिवर्सिटी है, केवल एक यूनिवर्सिटी है जो भारत में आप लोगों को मर्चेंट नेवी की डिग्री प्रोवाइड करती है अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कंसीडर करते हैं। तो इसी प्रकार इसी का एक CET प्रोग्राम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम, which is very necessary for all the students who wants to get appear or wants to do this course. Now in this I'll let you know many of the things which is very important. This IMU CET is forms are already out. I'll let you know the last date and all everything very soon. So इसके ये जो लिंक है, ये link I'll put it in my video in the description itself. This is the page where you have to come and register yourself. Start from the step 1. From here you will have a new registration. You have to click it and then go inside to do the fill basic for the step 1. Then you go further for step 2, personal detail, then qualification detail. Then step 4, you have to upload the scan, photograph and signature which should be in JPG, and then you will pay the fee and you will get registered with that. Next time if you want to come in the page, then you will come over here again, you have to sign in. Now in this side, there are very important information is given in this side. On top you will have a prospectus. अगर आप इस prospectus को देखेंगे, you will find inside एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट विद द IMU, नॉन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट। मेरे सजेशन में ये क्वेश्चन आता है बच्चों को कि कौन सा इंस्टीट्यूट हमें ज्वाइन करना चाहिए, तो माई सजेशन यू शुड ज्वाइन ऑलवेज IMU एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट। द रीजन इज दैट सपोज एनी काइंड ऑफ द रीजन इन फ्यूचर दैट नॉन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट इज क्लोज देयर window or school or college, then what you will do, what will happen with those certificate which is actually provided by them. So for those things you have to consider the affiliated institute, because the government cannot be closed, the institute cannot be closed, so your certificate which is generated for them, it is safe and secure. So my personal suggestion, you have to take care of this thing. Again, it's your decision which kind of institute you are going to be joined. Apart from this, from this prospectus itself, you will find number of the colleges, number of the institutes and their seats, in which course, how many maintained and everything. These all the things you will find from the prospectus itself. Now second point I'll elaborate you later on. Here you will have a eligibility criteria. As everybody knows that eligibility criteria is 60% in PCM, 50% in English. All the students who are in appearing stage, they are eligible to proceed this course. So if you are in appearing, let considered you will get this much of percentage. Now their question comes, suppose if they didn't get this much of percentage, then simple, if you have cleared the IMU CET, then also you are not able to join this course. Medical standard is quite simple. You have to go on DG approved center. Every state, in every city, there are some direct journal of shipping approved doctors. So you have to go there, ask them, I want to join undergraduate program, please do me the medical. So there are two sessions, one is deck side, second is engine side. So you have to tell him whether you want to go in deck side मतलब DNS and engine side मतलब BTech marine engineering. So whichever you want to do, you have to go there and do your medical. Now my personal suggestion to everyone, before starting this coaching, you have to go for medical first, because you have to medically fit.
कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट एलिजिबल. सपोज यू डू योर एवरीथिंग एंड लेटर ऑन यू फाइंड दैट कि अरे ये लो मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू विच इज मेडिकल थिंग. नाउ देयर आर लिस्ट ऑफ IMU campuses and programs, list of affiliated institutes and programs, list of non-affiliated institute and programs, and these are the certificate which you need to be made it before, because the form is already started. The last date form is 5th May. So before that, like, you will have a time to make it your OBC NCL, general EWS and SC/ST. The format is already given to here. That format you have to follow. Now we comes on this instruction for the online course. Okay, so prospectus सबके हो गए. This is the official website. Let's come on the down. Yeah, these are the UG program and we are very interested in this BTech Marine Engineering and BSc Nautical Science and DNS. See here, August batch and February batch. So if somebody is thinking that फरवरी में मेरा वापस से IMU CT होगा, तो नहीं होगा. This you have to clear it because फरवरी बैच का एडमिशन भी यहीं हो रहा है और इसी की रैंक बेस पे होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस द क्वेश्चन कम्स दैट कि BSc ज्वाइन करनी चाहिए DNS के. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू ट्राई फॉर द DNS नहीं मिल रहा है तो देन यू कैन थिंक अबाउट द BSc, बट थिंकिंग अबाउट द BSc बिफोर दैट यू हैव टू थिंक अबाउट द BTech Marine Engineering because here you will have a more advantage. More मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है. 90% more advantage if you do the BTech Marine Engineering rather than the BSc Nautical Science. Right? Next. Here you will have your August batch is going to be start from 1st of August. So सारे रिजल्ट 1st of August से पहले आपके आ जाने चाहिए और फरवरी बैच जो है वो 1st of February से स्टार्ट होगा. मोस्टली दिस टाइम itself all the institute who are going to be take the student for the DNS Fab batch, they will take it with this session itself. आपको नेक्स्ट सेशन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. ये लास्ट डेट आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 6 मई 12 बजे से पहले आपको इसको खत्म करना है. 6 मई का वेट नहीं करना है. यू हैव टू फिनिश एवरीथिंग इन अप्रैल इटसेल्फ. अप्रैल के लास्ट तक आप खत्म कर दीजिए. नाउ दीज आर द थिंग्स विच रिक्वायर्ड. सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए. दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. एवरीबडी नीड टू बी अप्लाई द पासपोर्ट टुडे इटसेल्फ. आज ही आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना. विदाउट पासपोर्ट यू कैन नॉट ज्वाइन दिस कोर्स. तो पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये दोनों चीज हो सकती हैं. 10th मार्कशीट आपके पास है. स्लो. हाँ, 10th मार्कशीट आपके पास है. 12th मार्कशीट में अगर आप अपियरिंग हैं तो यू राइट इट अपियरिंग, दैट्स नो इशू. 10th इज मोर देन इनफ. यूजी है नहीं. कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी डालना है. ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस डालना है. एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी सर्टिफिकेट डालना है. ठीक है. एंड यू नीड टू बी हैव दी सर्टिफिकेट ओरिजिनल बिकॉज जब एडमिशन होगा all the certificate will be verified and if you find you have taken the false promises then your admission will be removed. So false in promises ना करें. And the rank card will be come once the result come. जैसे आपका जून को एग्जाम होगा तो 15 दिन के बाद में रिजल्ट आ जाएगा. रिजल्ट आने के बाद में रैंक कार्ड आएगा. रैंक कार्ड को डाउनलोड करके आप सेफ एंड सिक्योर रख लीजिए क्योंकि बाद में प्रॉबेबली वो आपको अवेलेबल ना हो. ओके. नाउ हियर there is a one more things comes which may disturb. एक CUET आ गया है, Common University Entrance Exam. So if you are giving CUET, so then you don't need to require to fill IMU CT. But my personal suggestion, CUET के बेसिस में बहुत सारी अभी इंटरनल चीजें हैं where you may find a problem because CUET में PCM से जो देगा that person is only eligible for year. तो my personal suggestion कि you apply for the IMU CT. This is a good option rather than going for CUET. If somebody didn't know about the IMU CET and then he is coming with the CUET, there is fine because their syllabus is different, paper is quite hard, things are very different way rather than to compare to IMU CET. So my personal suggestion, you have to do IMU CET. Hope I have given all the information. So who are the students wants to do this Merchant Navy? Please fill this IMU CET form as soon as possible. And if any documents which is not preparing right now, take 15 days, prepare it and then upload it. Because whatever you are going to be upload that you had to show at the time of admission and it is necessary. I hope I have given all the information. Thank you to the watching to me. Kindly share as much as possible to the students so that they'll get a good
opportunity to get it this. Okay, and if I left it anything, please do comments. I reply over there. Thank you for the watching. हो गया.